So hello everyone, a very warm welcome to all of you on the YouTube platform of the right end. Myself Rajat, you must be knowing me as of now. Myself Rajat, and today we are going to start with the discussion of PIB compilation from 1st of April to 10th of April. So whatever the PIB news were there in the first 10 days of the new financial year, we are going to discuss all those things in detail in our today's lecture. Okay? But before I'll go live, but before I'll go ahead with the session, please do let me know in the chat box that whether I am audible and the screen is clearly visible to each and every one of you. Let me check it from my end as well, and then we will go ahead, okay? Please do let me know, whosoever is watching this session live, please do let me know in the chat box that whether I am clearly audible and the screen is clearly visible to each and every one of you. Okay, let me check it from my end as well. Just wait. Yes. Okay. ठीक है. So it's clearly audible and screen is visible. So I hope so. Same is going to be the case with you as well. If at any point of time, if you feel like that that the screen is not visible or any kind of issues are there with the sound quality, then do let me know in the chat box. Now, moving ahead with the discussion, with no further delay, let's move ahead with the discussion. Now, what I told you. So today we will be starting with the discussion of PIB compilation. PIB compilation of 1st of April to 10th of April. Whatever the things were there in the news. So now see, as of now, as of now, all of you must be knowing that on the 28th of April, RBI is going to release its short notification in the newspapers for the upcoming RBI Grade B examination. So, and the scheduled date for the phase one is most probably in the last week of the June 2025. So now whatever is in the news, starting from the April month, by the May, and by even the second week of the June month, whatever the PIB newses are going to be there, it is going to have the audible and visible, sir. Okay, Tulip, thank you. So whatever the newses are going to be there from the PIB compilation, starting from 1st of April till the second week of the June is going to be very important. And not only the April month, I would suggest all of you to cover the February and March month as well. Okay, at least 4 months of PIB compilation is going to give you the maximum output, but more than 5 months, if you are a full-time aspirant and if you are not working anywhere, then you can go ahead with the 5 to 6 months as well. But if you are a working aspirant, 4 months of compilation, Feb, March, April, May, to the second week or by the 15th of June, whatever compilation is going to be there, it is going to be sufficient for you people. Okay, so do attend all the live sessions from now. Whenever we are conducting any live sessions for PIB compilation or for any current affairs, do cover it at any cost. Okay. Now, with no further delay, let's begin with the discussion. The first news that we have is the phase one oriented. That recently the Lieutenant Journal, just wait for a minute, is there some issue? Just wait, okay? Just wait for a minute. Okay, so some technical issues were there. I have resolved those things. चलो, अब आगे बढ़ते हैं. The first news that we have is the phase one oriented news. The news is that Lieutenant General Dheeraj Seth has assumed the appointment of
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो इंडियन आर्मी का जो वाइस वाइस चीफ का पोजीशन होता है, उसको अज्यूम किया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी ने। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव ऑन द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सर्च। नाउ सी, whenever anything is in the news from the point of from the topic of electronics manufacturing, and even not the electronic manufacturing, but if something is in news because of the export thing, it becomes very important. Even concerning the present times, है ना, when India is facing a lot of current account deficit because of the increase in the prices of the crude oil, it is very important for us to have a great increase. It is very important for us to have increase in the export segment. जितना export करेंगे, उतना ज्यादा current account deficit कम होता चला जाएगा. And let me tell you, in terms of electronic manufacturing, we are doing very well, and it is one of those areas where India is targeting to increase their export market so that they can so that they can reduce the current account deficit. ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट whenever they are in the news we have to cover it in detail. So recently the Ministry of Electronics and Transform Information Technology has reported that smartphones have emerged as India's top export commodity in calendar year 25. So in the last year, in the previous year, the smartphone segment have emerged as the top exported commodity. अब खुद सोचो, all of us uses the smartphones in our daily life, ठीक है? And India is a country that exports the maximum amount of smartphone, ठीक है? So that's a very key achievement, and it is a very important news from the point of view of our export sector as well. And now what is this export milestone? So the smartphones has ranked first in India's export basket with a value of 2,62,452 crores. We have surpassed the export value of diesel as well as the diamonds. ठीक है? अब जब इतना अच्छा कर ही रहा है स्मार्टफोन, ठीक है, so what are the different schemes that we have to promote further the expansion of smartphone or electronic exports? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Hi Riyansh, hello. So PLI for large scale electronics. PLI for large scale electronics. ठीक है? So the recently, because of the production linked incentive. So production linked incentive is a scheme that came in existence. सर प्लीज हिंदी में भी बता दीजिए. ओके ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट. ठीक है प्रियांश, ठीक है. So PLI stands for Production Linked Incentive. ठीक है, Large Scale Electronic Manufacturing. So PLI is a scheme that Government of India launched, I think, in the 2021 or 2019. ठीक है, उसमें हुआ क्या था, that whenever a company will produce more and if they sells more, they are going to get the incentives. अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, ज्यादा बेचते हो, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. But this scheme was not there for every sector. हर सेक्टर के लिए नहीं थी. It was there only for the selected sectors. ठीक है, and electronics were one of those sectors. Electronic manufacturing was the one of those sectors जिनके लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई. उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ है that the mobile production has doubled from 2.14 lakh crore to 5.5 lakh crore starting from financial year 20 to 25. Mobile export grew by eightfold, and all these phenomena, because of the increase in the export of the electronic products, specifically dominated by the smartphone exports, the job has also got created. The direct job generation has been near around 1.85 lakh. That's a huge number. ठीक है. अब ये भी बात होती है कि देखो, जब हम when we are exporting smartphones, तो अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि हम यहाँ खुद यहाँ असेंबल करते हैं, कि हम बनाते भी यही है, असेंबल भी यही करते हैं, एंड देन एक्सपोर्ट करते हैं. सो दीज आर दी टू डिफरेंट थिंग. द परसेंटेजेस ऑफ इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सबको समझ में आता है. वी आर डूइंग वेरी वेल इन द एक्सपोर्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स. ठीक है, in terms of the export commodities, we export multiple things. Smartphone holds the first rank, but the difference will get created that whether we are we have the entire ecosystem for smartphone manufacturing, or just we are just assembling the smartphones and exporting it. ठीक है,
वो चीजें डिफरेंट होती है. So recent, as per the recent information, the domestic value addition has also improved significantly. Now 18 to 20% of a entire smartphone components are indigenous. They are getting manufactured in India, and then they are getting assembled, and then they are getting exported. A decade ago, it was only in a single digit, so that's a great thing. Moving ahead, PLI 2.0 for IT hardware. So IT hardwares के लिए भी production linked incentive 2.0 version launch किया था government ने. And under because of these schemes, they have produced the export the IT hardwares worth of 18,863.1 crores till Feb 2026, focusing on laptops, tablets and servers. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. Then we have another scheme, electronic component manufacturing scheme. So same reason that I told you. It If I'm telling you that okay, India is exporting a lot of smartphone on a global level, we are holding some top position when if we are talking about the smartphone exports. But the next question that should come in your head is, but sir, what is the reality? Whether we are just assembling it in our country, or we are manufacturing the components of the smartphone, then we are assembling it, and then we are exporting it. So these are the two different things. That is the reason to promote the manufacturing as well. Electronic component manufacturing scheme came in existence. Now, what was the aim? The aim of the scheme was that we should be producing PCB on a local level. We should be producing camera modules as well, and this some assemblies line as well. Okay? In 2026 budget, the outlay has been enhanced from 22,919 crore to 40,000 crores due to overwhelming industry response. ठीक है? चलो, moving ahead. The next thing that we have is the CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, concessional duties for the Special Economic Zone to domestic tariff area sales. Now see, what is this Special Economic Zone? So in our country, multiple areas has been identified as a special economic zone. These are the areas where we have different tax compliances, different rules and regulations as compared to the other part of our country. Now you will ask me, sir, ये जो आप different taxes की बात कर रहे हैं, ये क्या है? जो different rules and compliances की बात कर रहे हैं, वो क्या है? So these are the areas where if any firm is setting up their firm, ठीक है, they will be required to pay less taxes. ठीक है, they will be required to have they have very less compliance requirement as compared to the other part of our country. ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के. तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. दीज आर द इकोनॉमिक जोन बट दे आर स्पेशल इन नेचर. डीटीए क्या होता है सर? सो डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज वॉट एवर. सो फॉर एन एग्जाम्पल, if this is the area, and in this area a particular part got classified as a special economic zone, so the remaining part will be domestic tariff areas. So all the normal part of our country is domestic tariff areas. वहां पे वही rules and regulations follow किए जाएंगे जो normally पूरे इंडिया पे लगता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ लिबर्टीज होती है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो हम देखते हैं. ठीक है, सो कमिश्नल ड्यूटीज पे कुछ रिलीफ दिया है सीबीआईसी ने, देखते हैं क्या है. So recently, the Central Board of Indirect Taxes and Customs has implemented a key Union Budget Financial Year 27 announcement because they have notified one-time relief measure. This relief measure is a one-time relief measure for special economic zone units. All those units, as I told you, if there is a unit who is established, who is working in a special economic zone, they are going to get a lot of benefits. ठीक है? ये क्या चीज है? वन टाइम रिलीफ मेजर क्या है? So it is going to be applicable from April 1st to March 31st, 2027. So almost एक financial year के लिए दिया है. Cut-off date. Only those units will get the concession, that those units who have started their production on or before March 31st, 2025. ठीक है? जिन्होंने भी March 31st, 2025 के पहले start किया होगा. So please just wait for a minute. Let me check it here. Just wait, okay? Mm, Just wait for a minute. I'm not able to read your comments, so उससे भी इम्पोर्टेंट भी बता दीजिए. सर प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट भी बता दीजिए. हाँ ठीक है, आई विल टेल यू, डोंट वरी. ठीक है,
सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम बात करें तो यहां तक समझ में आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये रिलीफ उनको दिया गया है, क्यों रिलीफ दिया गया है? So the relief is going to be given. The relief provides a tiered reduction in custom duties. बेसिक कस्टम ड्यूटीज, जो कस्टम ड्यूटीज होते हैं, बिकॉज सी जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, इवन इफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इन योर कंट्री, द टेरिटरी ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज नॉट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इसको हम फॉरेन टेरिटरी मान के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी चीज, ठीक है, अगर कोई भी चीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, इवन इफ दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज देयर इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन इंडिया, ठीक है, वन ऑफ द इंडिया के स्टेट्स में भी है अगर वो, और अगर वो बाहर से भी कोई सामान बेचता है, मतलब इंडिया में रह के इंडिया में कोई सामान एक्सपोर्ट, कुछ चीज बेचे, तो वी कंसिडर इट एज एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, दैट इज अ रीजन। इसलिए जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज देने की बात क्यों आ रही है सर, कस्टम ड्यूटी तो हम तब देते हैं जब हम कुछ अब्रॉड से चीजें मंगवाते हैं, है ना, जब कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन हो तब सर बात करते हैं कस्टम ड्यूटीज की। दिस इज द रीजन बिकॉज these एरियाज आर नॉट गेट कंसिडर्ड एज अ टेरिटरी ऑफ इंडियन, ठीक है। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी में दिया जाएगा, हेल्थ सेस में बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा? इफ द 7.5% इज द स्लैब रेट, उसको कम कर दिया उन्होंने 6.5%। 10% के स्लैब रेट को कम करके 9% कर दिया। 15%, इसको आपको याद रखना है, ये परसेंटेजेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब कभी भी कोई नया टैरिफ सिस्टम आता है इन टर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप इंडिया में ही रह रहे हो, एक इंडिया का पार्ट है, बट हम उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते, मतलब टेरिटरी तो इंडिया की है, बट उसमें जो यूनिट्स है ना उनको हम एज अ फॉरेन एंटिटी ट्रीट करते हैं। अगर महाराष्ट्र में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अब वो महाराष्ट्र का में बना के महाराष्ट्र में बेच रहा है, बट वी विल ट्रीट इट एज अ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फिनोमेना, ठीक है, वैसे ट्रीट करते हैं, हम उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक है। सो नाउ दे हैव रिड्यूस द कस्टम ड्यूटीज, 15% को 10% कर दिया है, 20% को 12.5% कर दिया है, एंड अबव 30% जो स्लैब्स थे उनको 15 to 20% पे लाके कैप कर दिया है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या चीजें हैं, ये क्यों दिया जाएगा आपको? तो फर्स्ट मैंडेट इज अ मैंडेटरी मिनिमम 20% ऑफ वैल्यू एडिशन मस्ट बी अचीव्ड विद इन दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसा नहीं है कि आप सामान लेकर आए, आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक अपना मैन्युफैक्चरिंग हब डाल दिया, वहां पे आप सिर्फ असेंबल कर रहे हो एंड देन यू आर सेलिंग इट ऑन द एंटायर इंडिया, इन द एंटायर इंडिया, एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नो, एटलीस्ट 20% value addition on any production should must have got originated or should have got achieved within the special economic zone। पहली बात तो डीटीएस सेल कैप, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आप कितना बेच सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया लेट्स कंसिडर दिल्ली, तो दिल्ली को हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस कर दिया, ठीक है। सो नाउ दिल्ली इज एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया इज अ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है। अब उसमें सेल कैप भी है कि हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कितनी चीजें बेच सकते हैं, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। Sales are restricted to 30% of the highest annual FOB export value achieved in the last 3 financial year। आपने लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्सपोर्ट किया होगा अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोडक्शन यूनिट से, उसका सिर्फ 30% ही, ठीक है, उसका सिर्फ 30% ही आप इंडिया में बेच सकते हो। ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज सो दैट दे विल एक्सपोर्ट मोर एंड मोर टू दी अब्रॉड। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया, नाउ यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब आप इंडिया में ही बेच दे रहे हो, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो फिर आप इंडिया में कहीं भी सेटअप कर लो अगर आपको इंडिया में ही बेचना है तो, ठीक है। तो अगर आपको इतनी छूट दी जा रही है, आपको इतने ज्यादा कंसेशंस दिए जा रहे हैं, तो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप एक्सपोर्ट कर सको, आप सस्ते दाम में बनाओ चीजों को और एक्सपोर्ट करो, तभी तो फायदा होगा ना इंडिया का एक्सपोर्ट के। जब आप एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे चीजों को, तो हमको कस्टम ड्यूटी मिलेगा, इंडिया को, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बना रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फायदे भी ले रहे हो और फिर इंडिया में ही बेच दे रहे हो, तो कोई सेंस तो बनता नहीं इस चीज का, ठीक है। दे हैव एक्सक्लूडेड दी सेंसिटिव सेक्टर्स सच एज पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, जेम्स एंड ज्वेलरी आर एक्सक्लूडेड टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों में काम कर रहे हो तो आप इंडिया में नहीं बेच सकते, इसको आप बाहर ही बेचोगे, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, NHAI achieve robust growth in national highway development। Now this is a very phase one oriented news, ठीक है। This is not important from the phase two level, but yes, whenever we talk about the infrastructure, now if
if a particular infrastructure is associated with the social infrastructure or the economic infrastructure, doesn't matter. If infrastructure is there, it becomes very important from the point of view of the economy, because any for any market activity, for any economic activity or business activity, the existence of critical infrastructure is the fundamental thing. And the road the you can say the road infrastructure, the logistic infrastructure is a one of the critical infrastructures. ठीक है? So National Highway Authority of India has achieved robust growth in the national highway development. कितना इन्होंने बनाया है national highway in the financial year 26? Let's see. So the authority has recorded 15% higher construction rate than planned. Actual construction कितना हुआ है? 5313 kilometer of national highways have been built during the financial year 26. ठीक है? याद रखना. Skill India Hub 2.0. So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched a new portal. What is the name of the portal? और ये पोर्टल करता क्या है? पोर्टल नहीं है, एक तरह का हब है, बट इट इज अ डिजिटल पोर्टल ओनली. ठीक है? सिद्ध 2.0, the full form stands as the Skill India Digital Hub. So basically it is a backbone kind of structure. ठीक है? That is there for the Skill India mission. So SDS 2.0 serve as the digital backbone. Digital backbone. All the information of the Skill India missions, the different courses that we have, who are the organizations who are providing these courses, how a person requiring some skill certification or skill courses can get enrolled in those courses. Everything, everything get tackled care by this the portal hub जो भी है. ठीक है? So it acts as a one stop shop for all skilling, apprenticeship and employment needs across the country. It's a one stop shop. ठीक है? यहाँ पे आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी कि now see, now how you can utilize this in your examination. Obviously आपको समझ में आना चाहिए. Skill India Digital Hub, if they asked a very normal question in the phase 1, which of the following ministry has released the Skill India Digital Hub 2.0? Or they can ask that still recently the Ministry of Skill Development has launched a new uh, they will not mention the ministry for an example to make it more difficult. Recently the government has announced the launch of Skill India Digital Hub 2.0. This hub is associated with which of the following schemes? अब आप सोचोगे सर स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया मिशन सर इजी टिक कर देंगे. वहां पे ऐसे ऑप्शंस देंगे आप कंफ्यूज होगे. ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की पांचों स्कीम डाल देंगे ऑप्शन में. कैसे गेस कर लोगे आप? ठीक है? तो ऐसे तो इंपॉर्टेंट है ही. Coming back from the point of view of phase 2, as of now, India is doing a lot of things. Indian government is emphasizing very much on the skill development sector. ठीक है? Because we know that we have the highest concentration of youth on a global level, and we must be providing them the industry is required skill set if we want to harness the potential of demographic dividend. ठीक है? So उस point of view से बहुत important. श्रेष्ठा स्कीम रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स. अब ये क्यों आया है न्यूज में? This came in the news, this particular scheme came in the news because the government Ministry of Social Justice and Empowerment has released some update, some information on the Shrestha scheme. ठीक है? फॉर द पीरियड 2024 टू 2026. तो 3 फाइनेंशियल ईयर में क्या चीजें हुई है, क्या नहीं चीजें हुई है, उसको लेके इन्होंने अपडेट दिया है. यहाँ पे वो अपडेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता. ठीक है? इफ दे हैव रिलीज सम काइंड ऑफ कंक्रीट डेटा कि फॉर एग्जांपल वी हैव द प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना? अंडर द स्कीम एज ऑफ नाउ 10 lakh accounts has been opened under the Pradhan Mantri, you can say the Ayushman Bharat Yojana. This much amount of Ayushman Bharat cards has been released. So that's a concrete kind of data. It becomes important from the examination point of view. But in these kind of news, in these kind of schemes, when these kind of schemes comes in the news, the important thing is कि आपको उस schemes के बारे में पता हो. ठीक है? आपको schemes के बारे में पता हो. Especially when the scheme is associated with the topic of social justice. Now, we as an we as a you can say the government try to provide justice to whom? To the marginalized part of the society. But this marginalized part is SC community, ST community, economically weaker section community, females community. These are the marginalized part of the society, है ना? तो बेसिकली सोशल जस्टिस जो स्कीम होते हैं दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द विमेन, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कम्युनिटी एंड द ओल्डर कम्युनिटी एटसेट्रा.
Now the Shrestha scheme stands for Scheme for Residential Education for Students in High School in Targeted Areas. So in the targeted areas, they will be setting up the residential schools. ठीक है. अब ये target area क्या होगा सर? So these target areas are going to be those areas where we have the high concentration of SC community people. ठीक है. Now, these schools provide high quality education to meritorious SC students who cannot afford premium private schooling. Category क्या है? Only scheduled caste students are going to be eligible. Income ceiling, the annual family income must be equal to or less than 2.5 lakhs. Academic bar, student must have passed the class 8 पास होना चाहिए बच्चा, ठीक है, और क्लास 10th इन द प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है. सिलेक्शन कैसे होगा सर? Admission is going to be given through the National Entrance Test for Shrestha scheme. NETS is a examination that happens if if a student just have passed the class 8th or class 10th, if they clears this examination, they will be able to enroll in these schools. ठीक है? मोड वन प्राइवेट स्कूल्स में भी ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल असिस्टेंस covering tuition fee, hostel fee, and supporting services. Additional 10% of annual fee is provided if student requires a bridge course to catch up with the private school curriculum. क्या बेचारा बच्चा 8th में मान लो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, वो प्राइवेट स्कूल में आ गया अंडर द स्कीम. अब उसको कुछ एक्स्ट्रा लगेगा एफर्ट कि उसको पैचअप करना है उन बच्चों के साथ, टू डेवलप सेम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, टू डेवलप सेम काइंड ऑफ you can say mindset. So they will be, that student will be requiring some extra efforts. ठीक है. माइट भी उसको एक स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेनी पड़ जाए, या उसे कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़ जाए, उसके लिए भी 10% ऑफ द एनुअल फी एडिशनल जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट करती है, सो दैट ही कैन ब्रिज द he can bridge the gap that is there, he can catch up that difference. ठीक है. नशा मुक्त भारत अभियान. On April 1st, 2026, government has launched the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. ठीक है. लॉन्च नहीं किया उन्होंने, अपडेट दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अपडेट दिया है. क्या अपडेट किया है? सो दिस स्कीम गॉट लॉन्च्ड इन द ईयर 2020. नाउ द कैंपेन हैज एक्सपेंडेड from vulnerable districts to all districts of our country. Earlier, when it got launched in the year 2020, it was only there for the vulnerable districts, where we have the high presence of, you can say, the where we have the very high concentration of addicts. Now this addict, obviously the addiction of liquor or any kind of nasha. ठीक है. So cities, districts having high concentration of addicts people, in those cities it got launched in the year 2020, but now it has been expanded across all the district of the nation. ठीक है. चलो. Extension of rebate of state and central taxes and levies scheme. Now, what is this scheme? So, when so this scheme is all about the scheme is ये ऐसा है that when we export something, ठीक है, in terms of specific product, when a firm export a specific kind of product, so they get some kind of rebate on what? On custom duties, on multiple taxes as levies that we have in the export or import product. ये है total. अब ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है. सो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू टारगेट इज गोइंग टू बी टेक्सटाइल प्रोडक्ट. ये भी समझ में आता है सर. हाँ. But this particular extensions that we have, so but sorry, but this the kind of, you can say, the rebate that we used to provide on the export and import of textile products, this has been extended to whom? To the apparel and made up industry. देखते हैं क्या चीज है. New validity. So now it has been extended up to September 30th, 2026, or until the end of 16th Finance Commission cycle approval. ठीक. Scope क्या है? It covers apparel, garments, and made-ups. These are the different kind of textiles we have. टेक्सटाइल अब बोल दो कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अपैरल इंडस्ट्री अलग होती है, गारमेंट्स अलग होते हैं, मेडअप्स अलग होते हैं. ठीक है. कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रीबेट. छूट देना है. क्यों छूट देना है? किसमें छूट देना है? छूट देना है सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस में. ठीक है. छूट देना है. So to rebate all embedded state and central taxes that are not refunded through GST or other existing mechanism. तो जो भी सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, ऑन दोज टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जहां पे जो कि रिफंड नहीं होते अंडर द जीएसटी नॉर्म्स.
उनके ऊपर हमको रिबेट देना है। This zero rating of export is crucial for MSMEs which form the backbone of the textile sector. अब यहाँ पे ना over here government is trying to target both two kind of phenomena, ठीक है? Not the phenomena, sorry. Two kind of industry government is trying to target. Now they will be providing rebate, ठीक है? For what? For the export. So when you are providing export rebate to the export, obviously your export is going to be cheaper. And when it is going to be cheap, you are going to be more competitive in a global market. It will increase the export market of our country. ठीक है sir. Now, in the textile sector, when the textile sector export products, the majority of the production comes from the MSME segment, micro, small, and medium enterprises. So basically, government is providing rebate to the firms who are in the textile sector and making exports and doing exports. But in the textile sector, the majority of the sectors that participate in the export is MSME. So eventually, government will be targeting two separate segments. टेक्सटाइल भी मतलब एक्सपोर्ट सेगमेंट भी हमने डील कर लिया, साथ में एमएसएमई को भी हेल्प हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। नाउ दिस इज अ स्कीम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो यहाँ पे एसटी कम्युनिटी की बात होगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात होगी, बिकॉज दिस स्कीम इज ऑन फ्रॉम द साइड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, राज्यसभा, इन द इन द लोअर हाउस, sorry, in the higher house of our country, the Ministry of Tribal Affairs has given some update, some implementation status of the धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम। ठीक है, क्या चीज है? The scheme first of all got launched on October 2nd, 2024। तो नई स्कीम है पहली बात तो। Now this एम क्या है? The scheme aims to saturate infrastructure and social gaps। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है और जो भी सोशल गैप्स है उनको फिल करना है। कहाँ पे फिल करना है? In those villages where the tribal population is dominated. It means those tribal dominated villages, we will be trying to saturate the infrastructure, now all kind of infrastructure। ठीक है, यहाँ पे infrastructure की जब बात होती है, then we are talking about the hospitals, schools, road infrastructures, community halls, etc. सारी चीजों की बात होती है। ठीक है, और even if there is some kind of social gaps, all those things will get saturated in the tribal dominated village across India, ensuring whole of government approach to tribal development. What is the name? Name of the scheme is धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, target is 63,843 villages are the targets. Special focus are going to be given in Jharkhand, villages of Jharkhand. Duration starting from financial year 25 to financial year 29, 5 साल के लिए ये चीज जो है वो रन करेगी स्कीम। अब क्या क्या इंटरवेंशन है? सो 17 मिनिस्ट्रीज विल कम टुगेदर, 17 ministries will come together and they will make 25 kind of different interventions। ठीक है, but these interventions can be there for the development of schools, for the development of you can say for the development of hospitals, for the development of roads, etc. Key sectors includes infrastructure, see I told you, roads, housing, health, education, आंगनवाड़ी centers and livelihood centers। ठीक है, ये चीजें हैं। बजटरी आउटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 79,156 crore is the total budgetary outlet of the scheme. Nodal ministry is Ministry of Tribal Affairs, and on a national level, we have a project management unit as well for the management of the scheme. Then we have the Saksham Anganwadi scheme. Just wait for a minute. What is happening? Just wait. अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो पीछे। ठीक है, चलो। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। Now, this is a flagship scheme of the Ministry of Women and Child Development. ठीक है? As we have DN, NR, NR, NRLM scheme, है ना? NLRM scheme, National Rural Livelihood Mission, that is a flagship scheme of the Ministry of Rural Development.
We have Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme, that is a flagship scheme of Ministry of Finance. So for the Ministry of Women and Child Development, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 is their own flagship scheme. अभी क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं फटाफट से, थोड़ा सा न्यूज है फटाफट से करते हैं. सो पोषण 2.0 क्या चीज है सर? सो इट इज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट. पोषण समझ में आ रहा होगा ना? पोषण. सो पोषण 2.0 इज एन न्यूट्रिशन. पोषण का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन. द टर्म, द मीनिंग ऑफ द पोषण इज न्यूट्रिशन इन इंग्लिश. So Poshan 2.0 is a scheme where we provide nutritional support to whom? To children, to adolescent girls, to pregnant women and lactating mothers. इन सारे सेगमेंट्स को हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, दोनों चीजें देखते हैं. सो दीज आर द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. वी ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रंस. छोटे बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं, वो भी बहुत जरूरी है. वी ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ चेकअप्स बिकॉज pregnant women are also involved. Lactating mothers are also getting is one of the beneficiaries of the scheme. So we do provide health checkups and referral services भी है. ठीक है. These are the 6 services that we have under the Poshan 2.0 scheme. So it's an entire package of different services. One of the part of this scheme is Poshan B, Prai B. ठीक है. This is a one of the sub part of the sub scheme you can say that is there under this scheme. क्या है? तो this focuses on improving early childhood care and education. बच्चों को छोटे, अभी छोटा है बच्चा मान लो, अभी उसकी चाइल्डहुड में उसकी केयर की जाए, उसको एजुकेशन दिया जाए. दिस इज द फोकस ऑफ द स्कीम. अब ये कैसे किया था? आपने आंगनबाड़ी सुना होगा ना. सो वी हैव आंगनबाड़ीज in the rural areas, in the semi-urban areas as well, we have the Anganwadi centers. Even in the urban areas, we have the Anganwadi centers. ठीक है? So these Anganwadi centers provide this a basic grassroots level infrastructural support to this scheme. Lactating mothers, pregnant women, the adolescents, the childs can reach out to these Anganwadis. They can get the nutritional support. These lactating mothers and the pregnant women can get the basic health checkups. They can get some basic medicines as well. तो ये जो है, जो आंगनवाड़ीज है, उनको अगर हम प्रमोट करते हैं, if we build more and more Anganwadis, if we provide capacity building activities for the Anganwadi workers, then ये जो स्कीम है, पोषण भी पढ़ाई भी, this part of the scheme is going to do very well. So that is the reason. The one of the focus of the scheme is to capacity building of the आंगनवाड़ी workers. ठीक है, ताकि उनको ट्रेन किया जा सके. करिकुलम क्या है? Implementation of नव चेतना. This is an curriculum that is there for the आंगनवाड़ी workers. Workers ये चीज अगर कोर्सेज करेंगे, करिकुलम को वो पढ़ते हैं, then they can provide early stimulation for the children who is between the age gap of 0 to 3 years. Adarsh Shila. This is also a curriculum design that is there for the children of the ages 3 to 6 years. Funding, sir, पैसा कहाँ से आएगा? So per kid, देखो, kid allocation is going to be there up to 3,000 per आंगनवाड़ी सेंटर annually. ये इतना पैसा दिया जाता है हर आंगनवाड़ी को पर ईयर. ये पैसे हैं इन चीजों के लिए. ठीक है. प्री स्कूल एजुकेशन किट के लिए दिया जाता है. प्री स्कूल एजुकेशन किट, क्योंकि स्कूल तो आप क्लास 5 या 6 में जाओगे, क्लास 1 या 2 में है. बिफोर दैट वी हैव द प्री एजुकेशन. तो ये उस चीज को टारगेट करता है. यहाँ पे इससे ये चीज याद रखना. यहाँ पे जब हम बच्चों की बात करते हैं, सी यहाँ पे जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये जो एज है ना बच्चों का, जिसको हम कवर करते हैं अंडर दी पोर्शन 2.1 एंड आंगनवाड़ी स्कीम, एज इज, यहाँ पे जो चिल्ड्रंस की एज है ये होती है 0 to 6. ठीक है. इतने एज के बच्चों को टॉलरेट करना है. चलो, 11 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. अब ये क्या स्कीम है? It's a very great scheme, and this scheme has got implemented very well, and they have also, you can say, the whatever the aim was there of the scheme, they have achieved it very well. ठीक है? And the ground level impact is also very well. So government of India recently celebrated 11th anniversary of Pradhan Mantri Mudra Yojana. Now this in the Mudra Yojana, basically the fundamental or the agenda of the scheme is to provide collateral free loans. किसको provide करना है? We will be providing collateral free loans to the non-corporate, the small and micro enterprises. ठीक है. But हाँ,
ये जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है ये नॉन फार्म एक्टिविटीज में इंडल्ज होनी चाहिए, फार्म एक्टिविटीज के लिए नहीं है। फॉर फार्म एक्टिविटीज वी हैव डिफरेंट स्कीम्स, प्रधानमंत्री यू कैन से द किसान क्रेडिट कार्ड scheme is there, then the MISS scheme is also there. So multiple schemes are there to provide short term credit to the farmers and for the allied activities, है ना, agriculture and the allied activities. We have multiple schemes, but this scheme is there to provide collateral free loans to non corporate and नॉन फार्म माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये है फंडामेंटल, ठीक है, ये बेसिक फंडा है बिहाइंड द स्कीम। अभी कब लॉन्च हुआ था सर? सो दिस गॉट लॉन्च इन द ईयर 2015, तभी 2026 में 11 साल हो गए। नाउ दिस स्कीम हैज ऑलवेज बीन and with the time it has evolved into a cornerstone of India's financial inclusion strategy, because no one provides the credit facility to a firm, especially to the micro and small enterprises with no credit history, with no credible credit history. कौन प्रोवाइड करेगा आपको? अभी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई कैसे जज करेगा? हाउ अ पर्सन विल बी एबल टू जज योर क्रेडिट वर्दीनेस? ठीक है, सो these small institutions, non-corporate institutions, struggles a lot in getting the access of institutional credit. That's why government came up with the scheme and they launched the Pradhan Mantri Mudra Yojana, so that this non-farm small and micro enterprises and non-corporate entities can get access of institutional credit on a easy terms, because the majority of the times these institutions they don't even have the collateral to provide, है ना, collateral भी नहीं है, कोई security भी नहीं है, तो कौन लोन देगा? Government is over here, government launched this scheme. We have different loan segment under the scheme, ठीक है, we will see all those loan segment. चलो आगे देखते हैं। So, under the scheme, government provide collateral-free institutional credit to whom? To non-corporate, non-farm, micro and small enterprises. Same thing that I told you. The scheme operates through a three-tier structure. Then we have a Mudra Limited. Now, this is a refinance agency as well. For an example, there is a SME, small and micro enterprises. State Bank of India is giving loan to the SME under the Mudra scheme. So this Mudra Limited will refinance the SBI. ठीक है, Mudra scheme. This Mudra Limited, it is an agency under the Companies Act. ठीक है, they will refinance the financial institution to further provide finances to small and micro enterprises. ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? So Mudra Limited is there as a refinancing agency to whom? To the member lending institutions and the borrowers. याद रखो, we have four loan categories: Shishu, Kishore, Tarun, and Tarun Plus. Loans up to 50,000 for early stage startups and businesses is the Shishu. Kishore, loan up to 50,000 to 5 lakh for stabilization and working capital purposes. Tarun is a loan category where they get the loan up to 5 lakh to 10 lakh for scaling up the operations. Then Tarun Plus recently got launched in the year 2024. Under this category, a SME can get the loan up to 20 lakhs, starting from 10 lakh to 20 lakhs. But yes, some condition is there. The condition is that you must have a track record of जीरो डिफॉल्ट्स, ठीक है, आपने डिफॉल्ट नहीं किए हो। तरुण तक की कैटेगरी जो है, शिशु, किशोर, तरुण, इन ऑल दीज कैटेगरीज यू मस्ट हैव पेड योर लोन अमाउंट ऑन टाइम. There should be no default. Then that SME is going to be eligible to get the funding under the Tarun Plus loan category. ठीक है, अब इसमें कुछ बहुत ही अच्छे की परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो यहाँ पे है, देखते हैं क्या चीजें हैं। सो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन्स को बहुत लोन मिला है अंडर द स्कीम. Approximately 60% of total loan has been given to women-led startups. पहली बात, 45.52% of loan accounts belongs to whom? Belongs to the person from the category of SC, ST and OBC. So it has done very well in the social inclusion as well. Financial inclusion में तो अच्छा काम किया ही, because they have given a lot of loans, ठीक है? But yes, the loan amount has been disbursed to the deserving communities as well. ठीक है? New entrepreneurs, 10 crore plus accounts belong to the first time business owners. And top states, the top states are UP, Bihar and then the Maharashtra. These are the top performing states under the Mudra scheme. ठीक, चलो, ecosystem क्या है? Now Mudra Limited has provided refinancing, sorry, so the refinancing agency, that is the Mudra Limited, they have reported the highest profit of 827 crore in the financial year 25 under the scheme.
The government not only provide the you can say the refinancing to the lending institution, government also provide the credit guarantee to the lending institution via the credit guarantee fund for micro units. Via this particular fund, government also provide the credit guarantee to the lending institution. ठीक है? एंड जन समर्थ पोर्टल पे भी ये अवेलेबल है, यहाँ से भी आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. सो दिस स्कीम हैज आल्सो हैव द डिजिटल कंपोनेंट. डिजिटल इंटीग्रेशन हैज आल्सो बीन डन फॉर द स्कीम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Then we have the National Highway Authority of India will be developing NHAI आरोग्य वन. क्या है ये कॉन्सेप्ट? So the National Highway Authority of India has announced that they will be setting up a new green initiative. क्या है ये? आरोग्य वन is the name. ठीक है, so this is a project where a thematic medicinal tree plantation is going to be there. ठीक है, it means आप देखोगे आंवला. ठीक है, gooseberry plants. So gooseberry आंवला जो है, it has a lot of medical properties. तो इसके plants हो गए. नीम that also have a lot of medical properties. So all those the vacant land parcels adjacent to national highway. आप कभी national highway पे जाओगे देखना, कहीं जो तो आपको मिलेंगे कि हाँ चारों तरफ हरियाली है, there are a lot of greeneries, there are a lot of plants, but in majority of the areas you will be seeing barren lands because national highways chooses the way outside from the majority of the cities, है ना, बाहर से निकलता है नेशनल हाईवे, सिटी के बीच से तो बहुत कम ही निकलता है. So majority of the times you will be noticing that there is a lot of barren lands, vacant land nearby the national highways. ठीक है? So in this barren lands, government, the NHAI will be starting a new initiative. They will be planting those trees that have the medicinal properties. आई बात समझ में? ठीक है सर. World Homeopathy Day 2026. Ministry of Ayush, that stand for Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, and homeopathy. ठीक है? A lot of the traditional way of treating individuals, the traditional uh, branches of medicine, we have the Ayush. ठीक है? So Ministry of Ayush celebrated the World Homeopathy Day. ठीक है? Why do we celebrate? Because this is the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann, who is the founder of homeopathy. याद रखना. थीम क्या था 2026 का? Homeopathy for sustainable health. This was the theme. Then we have the eighth Poshan Pakhwada week. Pakhwada means week. So eighth Poshan week. अब यहाँ से पोषण 2.0 पोषण you must be able to relate it, है ना? So पोषण क्या चीज होती है? पोषण पखवाड़ा means nutritional week, as we have the financial literacy week. On the same line we have the nutritional awareness week as well. ठीक है? So it will be there between it will be running campaign. The week is going to be there from April 9 to April 23rd, 2026. It has been launched by the Ministry of Women and the Child Development, and this is the 8th edition. ठीक है, चलो. FIU India and I4C signed MOU. Now, what are these two institutions? So, FIU is an financial intelligence unit India. So, it is an intelligence unit of our country. Intelligence, ठीक है? It is an intelligence unit of our country dealing in the financial market. फाइनेंशियल मार्केट में जो भी फ्रॉड्स होते हैं या जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है उसका इंटेलिजेंस जो कवर कर दिया ये कंपनी करती है या ये ऑर्गेनाइजेशन करती है. देन वी हैव दी another organization that stand for Indian Cyber Crime Coordination Center. So this is a coordination center that provide coordination between the different stakeholders that we have to deal with the cyber crime. ठीक. अब साइबर क्राइम में पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, साइबर क्राइम में एफआईयू भी इन्वॉल्व हो जाती है. In most of the cases, the ED also get involved, NIA, CBI also get involved. So multiple stakeholders get involved in any kind of cyber crime activities. ठीक है? So this center provide the coordination over there. These two organization, FIU India and the I4C, has signed an MOU. क्यों sign किया है? To bridge the gap that is there between the digital cyber attacks and financial system used to move stolen funds. ठीक है? जो भी गैप है कोऑर्डिनेशन में उसको फिल करने के लिए कर दिया है. एंड लेट्स सी आज को करते हैं, चलो इसको खत्म कर देते हैं. Ease of doing ease of doing research and development in India, R&D in India. So this is a report. First of all, two reports has been released by the Niti Aayog. These two reports stands for ease of doing research and development in India, कि कितना कितने आसानी से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया में.
And one another report they have launched on the ease of doing R&D in India, सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, कि कितना इजी है, और उसके ऊपर सर्वे भी कर लिया इन लोगों ने, क्या क्या चीजें हैं। तो दे हैव मेंशन्ड सम चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है? इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है, वी नीड मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल फ्रेमवर्क, ठीक है। फंडिंग आर्किटेक्चर, we require more and more funding to promote research and development, and even if we have funding, we require the flexible disbursement of the amount, है ना, and the greater flexibility is required in the financial norms, ताकि easily आपको पैसा मिले for the research and development। regulatory system, the compliance burden, रेगुलेशन में जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो compliances होते हैं, उसको भी थोड़ा रिड्यूस करने की जरूरत है। मेजर रिकमेंडेशन क्या है? We should have an outcome oriented environment, we should have a private sector participation, because government has a lot of things to do, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत चीजें करने को। So we do need the participation of private sector, and it's not only about the research and development बच्चों, ठीक है, in any area, if you want to do well, the participation of private sector is required, because the kind of you can say the kind of approach private sector brings, the kind of finances, the capital, the talent that is required, the efficiency that the private sectors bring, there is no match with those things, okay? So private sector participation is required in the research and development sector as well। अर्ली स्टेज सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब वो वही बात होती है, कोई अच्छा कर रहा है लाइफ में तो 10 लोग आते हैं मदद करने के लिए, बट जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, व्हेन यू आर इन योर इनिशियल फेज, that time we need to provide support, ठीक है। So early age support, stage support is also required for those institutions or to the young scientist that is there in the research and development segment। and mission mode R&D, ये नहीं कि चल रहा है पांच पांच छह छह सात से चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें निकल के भी आती है तो कुछ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, मिशन मोड R&D, ठीक है। We need to establish institutional structure, so that we should have a very clear mindset, okay, this is the kind of research and development we will be targeting, this is what we want to achieve, this is what we should be achieving uh, after this research and development, and we should have a proper framework so that we can implement it on an industrial level or on a larger scale, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ चीज बनाया और घर में लेके बैठे हो ना, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे इंप्लीमेंट कर सको ताकि उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। These were the basic recommendation। Then we have the प्रधानमंत्री जनजाति विकास योजना, but we are going to discuss it in our tomorrow's discussion। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। We are going to discuss it, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। So thank you so much for joining today's live session, and I hope that you people must have got valuable insight from this live class, and I would request to each and every one of you to not miss any of the PIB live sessions from today onwards, whenever we are coming up with any PIB live session। So first of all, we are providing all the PIB compilation discussion for free of cost, ये तो आपकी चीज हो गई, है ना। We are providing it for free of cost, and this is one of the major sources from where we have questions in all the phases of RBI grade B examination, not even the RBI, even in the NABARD examination as well, okay? So when you are getting an opportunity to have a session, a single hour session, see basically मैं 1 घंटे का session ही लेता हूँ, है ना। So when you have the opportunity to attend these kind of sessions, by sitting on your home, आप 1-2 घंटे का सेशन देख लोगे, सो इट कैन प्रोवाइड यू some benefit in your examination, ठीक है। So I do request to each and every one of you, do attend all the live sessions that will be coming up on the PIB compilation from today onwards, ठीक है। So let's meet tomorrow, till then have a great day ahead, bye।